Hello, everyone. Welcome to Thinking Out Loud. I'm at Greenbelt Observatory in Maryland, US. Today is the last full moon of 2024. So I'm here to take some pictures of that. I just quickly go set up the telescope and then we'll talk more about who am I and what this channel is all about. So let's go. This is the setup I have. The telescope is all set up. And as you can see, I'm inside the car and we can see the moon. So the setup is all done. We can see the moon. It's the last full moon of 2024. So I'm going to take some pictures here and then I will just move to taking picture of the Andromeda Galaxy M31. It's a very bright sky, so that will be the safest DSO to capture today. So I'm going to skip to that. And as you can see, the telescope is taking 10-second exposures. So meanwhile, you just enjoy the stacking of all the exposures in real time and see Andromeda Galaxy come to life. And meanwhile, let's talk about what this channel is all about. This is a YouTube channel. I'm starting to create content. Why not? We are evolving into a world where we are primarily driven by content and this consumption. So a little bit about me. My name is Uday. I am a Desi techie in US. I have completed all the checklists. Basically एक ideal Indian student की होती है engineering करी ठीक है सब लोग करते हैं computer science and decent engineering college. Then after COVID masters कर ली US में, got a job in the US. But the thing is I get pretty bored easily. So I think this is one of the things which I wanted to do. बहुत content consume सब लोग करते हैं मैं भी करता हूँ. So I was thinking why not start creating it. I'm not focused on ki to just follow the bandwagon. Yeah, just ki following the fad. I think I'm the most opposite from that category because doing this is very not easy for me. So I'm a person who hate listening to his own voice. So मैंने कभी editing भी नहीं करी है. So I think जब मैं इसको सुनूंगा बार बार मुझे सुनना पड़ेगा अपनी voice. So it won't be an easy task for me to first learn editing and then deal with listening to my own voice. I have had a lot of stage presence, so ऐसा नहीं है कि I'm not comfortable with public speaking, but speaking to a camera is a lot more different and it's a lot more weird for me. So this is something which was way out of my comfort zone, but something which I was very interested in because I have this thought, these ideas, and why not put it out कि जो भी आप अगर वैल्यू क्रिएट कर सकते हो, why not put it out on social media and you can create engagement, you can create your audience, you can create money out of it. This is one of the attempt to do this. अब ये बात है कि क्यों करना है ये सब, क्यों फालतू में टेंशन लो. और the thing is, the core principle behind me doing anything is कि मेरा focus is to get rid of the want of doing anything. The want of a result is the problem with any given thing you are trying to do. So अगर मैं कुछ करना जा रहा हूँ तो अगर मुझे उसका result, obviously I want it, but the thing is I always try to get rid of that want ताकि जब मैं वो चीज़ करूँ तो अगर मुझे सक्सेस नहीं मिले तो मैं उस रिजल्ट से अटैच ना होके आई वोंट गिव अप इजीली. एंड इट जस्ट आई वोंट डू इट बिकॉज ऑफ दैट एंड रिजल्ट जो मिलेगा मुझे. तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आई थिंक अगर मैं कुछ भी करने जा रहा हूँ तो आई जस्ट try to see that I will enjoy that doing something because I like talking about it, putting it out, finding my audience is something I want to do. ठीक है, हुआ चलेगा चलेगा नहीं चलेगा एफर्ट डालने में कोई जाता नहीं है. इट्स फ्री फर्स्ट ऑफ ऑल एंड आई हैव टाइम एंड द कंफर्ट एंड द प्रिविलेज टू डू इट. सो व्हाई नॉट. ऐसे मैंने जब मैं यहाँ से यूएस में हुआ था तो आई स्टार्टेड अ इंस्टा पेज. तो और मेरा ऐसा नीश भी नहीं है जिससे मैं एक इतना शॉर्ट अल्ट्रा शॉर्ट कंटेंट क्रिएट कर पाऊँ और उससे एंगेजमेंट ले पाऊँ. तो वो मेरा स्ट्रॉन्ग सूट नहीं था. बट बेसिकली मुझे एक चीज़ लॉग करनी थी. मुझे वो एक अपनी पर्सनल डायरी की तरह कोई क्यूरेट करनी थी और साथ में ये था कि आई आल्सो वांटेड टू शेयर इट. जो भी है
But the thing is, the process of it gives me fun, I think. Whenever I go somewhere, I pick some good videos out of it. So जो मुझे चीज़ पसंद आती है तो मैं उसको I try to focus on it and put it there so that वो मेरे लिए I enjoy the process of doing it. So this is something I'm expecting to be similar. I hope it is, because I consider myself, और basically categorize करूँ तो introvert category में मेरा personality आएगी. But I don't like to call myself an introvert or anything for that matter, because how I think of myself, or everybody should think of themselves, is not in a fixed way. So like people define themselves कि मेरे ये behavior traits हैं तो मैं ऐसा हूँ, मैं introvert हूँ, मैं लोगों से बात नहीं कर सकता, या मेरे ये skills हैं तो मैं ये कर सकता हूँ, मेरे वो skills हैं तो मैं वो कर सकता हूँ, तो मैं जिसमें अच्छा मैं वही कर सकता हूँ, तो मैं दूसरी चीज़ को explore नहीं करना चाहूँगा. This is called a fixed mindset. Basically you are limiting yourself by defining yourself and basically drawing a boundary कि भाई ये मेरा एरिया, यहाँ पे मैं कुछ कर सकता हूँ और मैं इसी में कुछ करूँगा, और इससे आगे जाने का मुझे मतलब वो रिवॉर्ड कुछ ऐसा है नहीं. अनलेस यू गेट अ ग्रेट रिवॉर्ड यू डोंट गो बियॉन्ड दैट बाउंड्री. बट फॉर मी आई एम प्लानिंग टू कल्टिवेट अ ग्रोथ माइंडसेट इन माई सेल्फ कि जो मैंने अपने को डिफाइन कर रखा है कि मैं ऐसा हूँ, आई डू द एग्जैक्टली अपोजिट. सो दिस इज समथिंग विच इज वेरी अनकंफर्टेबल फॉर मी, सो आई शुड डू इट सो दैट कुछ नहीं हुआ तो एटलीस्ट आई विल ग्रो, आई विल बेसिकली पुश दैट बाउंड्री. एंड बेसिकली वो बाउंड्री होती नहीं है, हम खुद ही बनाते हैं, तो उसको मिटाना ईजी है. अगर आपने रियलाइज कर लिया कि आपने बाउंड्री खुद ही बनाई है तो आपको इरेज करना भी आसान पड़ता है. बट पीपल थिंक दैट इट इज डिफाइंड, दे आर डेस्टिन्ड टू डू दिस, और उनकी किस्मत ऐसी है या वो पैदा इसलिए हुए थे. तो दैट इज अ वेरी फिक्स्ड वे ऑफ थिंकिंग इट. कमिंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, सो we have this kind of thing that we lean towards safety, we lean towards the bookish things, the laid out things. और उस चीज़ से क्या होता है कि हम एक बहुत ही फॉर्मलाइज और बहुत ही एक रोड मोस्ट टेकन फॉलो करते हैं rather than रोड लेस टेकन. सो ये चीज़ बहुत है. द सैक्रिफाइस ऑफ वांट, द process of enjoying the journey is something which I like to do, and this is which is I want to do through this channel. So most of the people who create content, they pick up their audience or they pick up a niche, and basically so एक कंटेंट क्रिएटर एक टाइप का कंटेंट क्रिएट करता है, तो एक वर्टिकल डायमेंशन में वो कंटेंट क्रिएट कर रहा है, राइट. एंड सम पीपल हु आफ्टर they have an audience, they try to diversify and they try to create different kind of content. But मेरा initial focus ही horizontal content है. I will try to focus on different areas like road tripping है, I don't know, I do cooking a lot. I will put out a lot of stuff on astronomy, how to do that, how to get started. मैं खुद सीख रहा हूँ, so why not learn and share the experience. So this is one of the things which I will be talking about. It's not a podcast. I am not trying to aim to form a podcast. I might bring some elements out of it, because podcast में क्या होता है ना कि podcast में when there are two people conversing, so basically the ideas are limited by the perspective of both of the persons who are having the conversation. So basically एक बंदा होता है apart from if they are not if one of them are not famous, because famous person brings in audience and engagement. But अगर दो बंदे बात कर रहे हैं और they are having a conversation, they are not well known, exchange of ideas है, उससे audience आएगी, ठीक है. People who will be able to relate to that ideas will enjoy that podcast. So a lot of apart from stories, because stories format में होता है कि कोई famous बंदा अपनी story बता रहा है तो people want to know that. So that's a different kind of engagement. But assuming, because obviously when people start they're not famous, so when they're trying to build an audience, so अगर आप दो बंदे ला रहे हो तो आप बेसिकली काफ़ी लिमिट कर रहे हो अपने आइडियाज़ को, बिकॉज एक बंदे के एक्सपीरियंसेस और आइडियाज़ और बेसिक पर्सपेक्टिव अलग है, दूसरा बंदे का अलग है, तो बेसिकली वो दोनों अपने पर्सपेक्टिव्स को बहुत डाइल्यूट कर देंगे to have a conversation. And that is what people do when we have a one-on-one conversation. We try to dilute our ideas or basically modify them a little bit, mince our words, थोड़े बहुत हमें करना पड़ता है to have a conversation. But basically I discovered that if you're talking just to a camera or talking to yourself, which I do a lot, so उस प्रोसेस में क्या होता है, you are not restricted by anything. But हाँ, उसमें ऑडियंस बनाना भी मुश्किल है, बिकॉज द थिंग इज ऑडियंस को रिलेट भी करना चाहिए. तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इस फॉर्मेट में ये है कि आई विल जस्ट पुट आउट माई थॉट्स, एंड इफ माई थॉट्स फाइंड एन ऑडियंस और वो उनको ग्रिप कर पाए, सो दैट विल बी अ ग्रेट थिंग. ऑब्वियसली देयर विल लॉट ऑफ थिंग गोज इनटू इट, लाइक प्रोडक्शन है, एडिटिंग है, ये सब चीज़ें मुझे सीखनी पड़ेंगी. बट द थिंग इज अगर मैं वो ग्रिप कर पाया और मैं अपने आइडियाज से, तो दैट आई थिंक दैट विल बी अ सक्सेसफुल टाइम टू बिल्ड एन ऑडियंस फॉर माई सेल्फ. सो वही मेरा फोकस रहेगा. ऑब्वियसली लर्निंग है, इट विल बी लाइक
like a business, like you just put stuff out there, you get the feedback. गालियाँ भी मुझे फर्क नहीं पड़ता. Any kind of feedback is important for me because I'm learning. So वो feedback लेके I will try to improve, and maybe it will end up being completely different from what I thought it would be after 6 months. So that is what I want to open this floor for discussion. I want to, for people who are listening, first video I think, so I don't think a lot of people will listen to it, but whoever are listening, I think because मेरी जो first engagement आएगी वो मेरे friends और mutual friends के through आएगी, तो the people who know me, I think उनसे मैं चाहूँगा कि they react and they comment on this or whatever they want to, like maybe DM me directly that what they want me to talk about or show. So let's just wrap it up today. I've got a good 20-ish minutes exposure of M31. I will do some pre-processing on it and we'll post a final image here so you guys can see. I think it was a bright night outside, so this was a good attempt. You can go up to an hour for an exposure for good details, but this is the result we got. I hope you guys liked it. Thank you for listening. Do like it for more reach, subscribe for more content along the way, and I hope you guys will have more fun than I would in this journey. So thank you guys for watching.